Hi guys, welcome back to my channel Let's Create with Anu, and this is Anuradha. And today's video is all about last minute tricolor badge. So before starting this video, please hit that red subscribe button and also press the bell icon for more such videos. So guys, इस बैड्ज को बनाने के लिए पहले हमें ट्राई कलर के पेपर चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू आवर फ्लैग। फिर उसके बाद उसे डिफरेंट रेडियस में काट लेना है। बाद आप देख सकते हो इसमें कैसे मैंने डिज़ाइन कट करके बनाया है। तीनों में ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर के पेपर सभी में मैंने इस कट बना लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें सारे सर्कल्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए अरेंज करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने बैड्ज के लिए रिबन बना रही हूँ। ये रिबन आप मार्केट से भी ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं हैंडमेड बना रही हूँ ट्राई कलर में। सो यहाँ पे मैंने अशोक चक्र बना लिया है और इसे भी मैं स्टिक करने वाली हूँ अपने बैड्ज पे। फिर उसके बाद एक कंप्लीट लुक आपको बैड्ज का पता चल जाएगा। तो हमारा ये पहला बैड्ज बन के रेडी है और इसे आप लास्ट मिनट में भी बना सकते हो। विद इन नो टाइम ये बन के रेडी हो जाएगा और फिर आप इसे एक पिन के हेल्प से अपने कपड़े के साथ अटैच कर सकते हो। सेकेंड बैड्ज आइडिया के लिए हमें पहले ट्राई कलर के अकॉर्डिंग छोटे छोटे राउंड शेप में सर्कल्स काट लेने हैं। उसके बाद मैंने बाकी सारे रिबन और अशोक चक्र भी ऑलरेडी बना के रखा है। अब सभी सर्कल्स को 2 हाफ में फोल्ड कर लेना है और फिर उसे स्टिक करते जाना है वन बाय वन। जैसे आप देख सकते हो पहले मैंने ऑरेंज को स्टिक कर लिया है। तो नेक्स्ट सारे वही स्टेप्स फिर से रिपीट करने हैं जो कि हमने पहले बैड्ज बनाने के लिए फॉलो किया था। सो हियर इज द कंप्लीट लुक ऑफ आवर सेकेंड बैड्ज। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।